हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए। आज हम डिस्कस करेंगे टीपीए के जो एमसीक्यूज हमारे बच गए थे, रिमेनिंग एमसीक्यूज, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का आगे के एमसीक्यूज। तो जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाएं और हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। सभी को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लाइव चैट में बताएं। हाँ जी, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 52। Which one of the following provision of the Transfer of Property Act 1882 provides that statutory duties of a mortgagee in possession? Option number A 76, option number B 77, option number C 78, option number D 79. Any one of you बताएं। So the correct answer is option number A, that is section 76। ठीक है जी, साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएं जो जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आप हमें मेल कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें चैट में बता सकते हैं। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। Which one of the following section of the TPA deals with the doctrine of substituted security? Substituted security बतानी है हमने। TPA में कहाँ पे डील करती है doctrine of substituted security? Option A is 68, 60, 70, 70, 71, 73। बताइए जी, A, B, C, D। So the correct answer of question number 53 is option number D, that is section 73, means substituted security. Now question number 54. Rule relating to marshalling securities is described in the Transfer of Property Act 1882 under section 80, 81, 892, none of these. So the correct answer is option number C, that is section 92. Now question number 55. अच्छा हाँ, ये C नहीं था, B था 81। ठीक है, नाउ 55। Which of the following section of the TPA provides that when there is an conflict between marshalling and contribution, marshalling shall prevail? ये कहाँ पे मेंशन है? 80, 81, 82, 83। एनी वन ऑफ यू, TPA के कौन से सेक्शन में ये मेंशन? So the correct answer is option number C, that is 82। ठीक है जी, नाउ 56। जो लाइव हैं आप साथ साथ मेरे आंसर देने से पहले आंसर दे सकते हैं। Section 81 of the TPA contains provisions relating to marshalling of securities, contribution to mortgage debt, subrogation, taking of securities. Any one of you? So the correct answer is option number A, that is marshalling of securities. So option A is the correct answer. Now question number 57. Which of the following is not correctly matched under the TPA? Universal Dhoni 1 to 8, Doctrine of Part Performance 53A, Marshalling by Subsequent Purchaser Section 65। हमने गलत बताना है, ठीक है, नोट करेक्टली लिखा हुआ है। Any one of you, ऑप्शन नंबर C, मतलब मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर सेक्शन 65 में नहीं है।
मेरे को लाइव चैट में बताएं ये कहाँ पे है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। ठीक है, अब लाइव चैट में बता सकते हैं ये कौन से सेक्शन में है। नाउ 58, लीगल जोन का आंसर ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, which of the following section of the TPA provides for subrogation? Section 90, section 92, section 91, section 93, any one of you. So the correct answer is option number B। ठीक है जी, सेक्शन 92 किससे डील करता है, दैट इज सब्रोगेशन। नाउ 59, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन कहाँ पे लगता है, सेल पे, मोर्टगेज पे, लीज पे या गिफ्ट पे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोर्टगेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6060, द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन enables third person to stand in the shoes of a creditor, creditor to sue the debtor, debtor to postpone the payment, includes all of these. So the correct answer is option number A, that is third person to stand in the shoes of a creditor. Now question number 61. Which out of the following is not a kind of mortgage? Mortgage नहीं है. Mortgage by conditional sale, usufructory mortgage, English mortgage, subrogation. Any one of you. So the correct answer is not a kind of mortgage. Subrogation is the correct answer. Now question number 62. State the correct answer. The family rule redeem up foreclosure down is a combination of provisions of option A 89 and 91, 91 and 92, 92 and 93, 91 and 94. So the correct answer is option number D. Now question number 63. Which one of the following section of the TPA स्टेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपीए डिफाइंस चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में बताना है। सेक्शन 100, सेक्शन 95, सेक्शन 105, सेक्शन 92। चार्ज बताएं कहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 100। ठीक है जी, 100 में क्या है, चार्ज है। नाउ 64, चार्ज एंड एक्सचेंज क्या है। टीपीए मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस बाय अटैच्ड एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, नन ऑफ दी अबव है। तो क्या है ये, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, अंडर द टीपीए अ चार्ज में बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन, एक्ट ऑफ पार्टीज एंड प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, डी आएगा, एक्ट ऑफ पार्टीज एंड प्रोसेस ऑफ लॉ। नाउ नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 104 ऑफ द टीपीए ऑन whom द पावर ऑफ मेकिंग रूल इज कन्फर्ड। तो क्या किसके पास होती है ये, हाई कोर्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नाउ अगेन नया हम आगे टॉपिक करते हैं लीजेस से रिलेटेड। ठीक है जी, लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 105 से लेके 117 तक। तो आपने बताना है मेरे से पहले जो जो लाइव हैं आप चैट में बताते रहें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्शन डील विद द लीज अंडर द टीपीए। सेक्शन 102 से 119, 105 से 119, 102 से 117, 105 से 117। एनी वन ऑफ यू, ए बी सी डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, 105 to 117. Again, next question is second question. Lease under section 105 of the TPA pertains to a lease of immovable property, a lease of movable property, both immovable and movable property, does not to any particular property. Correct answer is option number A lease of immovable property is the correct answer. Now question number 2.
Transfer of right to enjoy an immobile property in consideration of price is known as mortgage, actionable claim, lease, license. So the correct answer is option number C मतलब C, that is lease. ठीक है जी. Now question number 4. Which type of property may be used for lease? कौन सी प्रॉपर्टी को हम लीज के लिए यूज करते हैं? Movable, immovable, movable and immovable, none of the above. So the correct answer is option number B, that is only immovable. ठीक है जी, movable नहीं है, only immovable से डील करते हैं लीज. Now question number 5. MPAPO 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है. Now question number 5. In a lease of उदित प्रधान, ठीक है जी. In lease of immovable property, what is transferred is the right to enjoy the property, interest in the property, mesne profit, possession alone. ठीक है जी. जो लाइव हैं साथ साथ रिप्लाई करें. क्या क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर डालें 5, साथ साथ उसका आंसर बताएं. G. So the correct answer is option number A, that is right to enjoy the property. Now question number 6. In view of the section 105 of the TPA, a lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy such property in consideration of a price paid or promised or of money, a share of crops, service or any other things of value, an interest in specific immovable property for securing the payment of money advanced, ownership in consideration of price paid or promised, certain immovable property made voluntarily and without consideration. Any one of you? Question number 6 का आंसर है. So the correct answer is option number A, that is a right to enjoy such a property in consideration of a price. So A is the correct. Now question number 7. A lease can be made for a certain period only, for perpetuity only, none of the above, A and B both. Any one of you? Question number 7. So the correct answer is option number D. मतलब for a certain period only, for perpetuity only. A, B दोनों. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. तो जो आप स्टूडेंट्स लाइव हैं साथ साथ आप प्रॉपरली इनको सुने समझें. तो दिक्कत आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, लाइव चैट में पूछ सकते हैं. ठीक है. रिपीट बार बार इसको वीडियो को पॉज कर करके भी सुन सकते हैं बाद में. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. अ लीज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड इन परपेचुइटी. Can be expressed or implied, all of the above. So the correct answer is option number D, that is all of the above. मतलब सभी आएंगे. ठीक है जी. Now next question 9. In which one of the following section of the TPA an amendment was made in the year 2002? Section 100, section 106, section 108, section 110. Any one of you? So option number B, that is 106 is the correct answer of question number 9. Now question number 10. Pradhan. Now question number 10. The provision of section 106 of the TPA 1882 were substituted by the Transfer of Property Act Amendment Act 2002, and this provision came into force with effect from December 31st, July 1, October 13, November 2, 2002. Any one of you? बताएगा जी कोई? So the correct answer is option number A, that is 31 दिसंबर 2002. बिल्कुल लास्ट साल था, लास्ट दिन था साल का 2002 का. इस बात का ध्यान रखिए अमेंडमेंट का. ठीक है जी. According to the amendment to the Transfer of Property Act 2002, the period within the principal clause of section 106 of the Act shall commence from date of receipt of notice, date of issue of notice, date of summoning of notice, 15 days from the date of expiry of notice. Any one of you? Question number 11. So the correct answer is option number date of receipt of notice. So option A is the correct answer. Now question number 12.
In the absence of written contract, a lease of immovable property for the purpose other than the agriculture or manufacturing shall be deemed to be a lease from month to month terminable by 15-day notice. The period shall commence from the issuance of notice, receipt of notice, end of month of tenancy, knowledge of notice. Any one of you. So the correct answer is option number B, that is receipt of notice is the correct answer. Now question number 13. In the absence of contract or local law or uses, a lease of immovable property for manufacturing purpose shall be deemed to be a lease for year to year, a lease for month to month, a lease from minimum term of 2 years, and option number D is, ठीक है, आप तीनों में से बता दीजिए, ए आएगा, ठीक है जी, ईयर टू ईयर, ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. A lease of immovable property from year to year is terminable on the part of lessor or lessee by the notice. 1 month, 6 month, 3 month, 60 days. तो 6 month का नोटिस होगा, ठीक है जी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. नाउ डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Under the TPA, in the absence of a contract or local law, monthly lease is terminable by 15 days notice expiring, by 1 month notice, by 3 month notice to the opposite party, by 60 days notice. Any one of you. 15 का आंसर बताएं. So the correct answer is option number A, by 15 days notice expiring. ठीक है जी, लीगल जोन ए, बिल्कुल ठीक. बाकी भी जो लाइव है अपना साथ साथ बताते रहे. Generally, a lease of immovable property for agriculture purpose shall be leased from year to year, month to month, both A and B, none of the above. Any one of you. Question number 16. So the correct answer is option number A, that is year to year. Agriculture purpose के लिए lease year to year. Now question number 17. Which out of the following does not constitute agriculture lease? A lease for rearing tea plants, a lease for cultivation of indigo, a lease for cultivation of potatoes, a lease for gathering fruits from trees. Any one of you. So the correct answer is option number not constitute agriculture lease. Correct answer is option number D, a lease for gathering fruits from trees. बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं. Now question number 18. Termination of lease of immovable property shall be in the following manner: by oral intimation, by written notice, by sending agent, by telephonic intimation. Any one of you. क्वेश्चन नंबर 18 डालें, उसके सामने उसका आंसर करें. So the correct answer is option number B, that is by written notice. Now question number 19. A lease of immovable property from year to year can be made by oral agreement accompanied by delivery of possession, option number C is simple instrument, option number D is only by a registered instrument. तो क्या होगा? Only by a registered instrument. ठीक है जी, बिल्कुल सही. Next question. Question number 2020. Under the TPA, leases from month to month can be by oral agreement only, by oral agreement accompanied by delivery of possession only, either by a registered instrument or by oral agreement accompanied by delivery of possession, by a registered instrument only. Any one of you. A, B, C, D. So the correct answer is option number C, that is either by a registered instrument or by a oral agreement accompanied by delivery of possession. Now question number 21. A lease of immovable property for any term exceeding 1 year can be made only by a registered instrument, by oral agreement accompanied with the delivery of possession, either by oral agreement or by a registered instrument. A, B, C, D.
So the correct answer is option number A, that is only by a registered instrument. A. Question number 22. Where a lease of immovable property is made by a registered instrument, such instrument shall be executed by lessor only, by lessee only, by either of the two, by both the lessor and the lessee, any one of you. So the correct answer is option number. So the correct answer is any one of you. लाइव जो लाइव हैं साथ साथ बताएं क्या आंसर होना चाहिए. Option number D, by both the lessor and the lessee. Now question number 23. In which section of the TPA the provision regarding rights and liability of lessor and lessee are provided? 107, 108, 109, 110. Any one of you. TPA के राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ लेसर एंड लेसी कहाँ पे हैं? ठीक है जी, 108 में. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. Determination of lease is dealt with under the TPA. Section 108, 107, 113, 111. सो ए बी सी डी में क्या होगा? 111. ठीक है जी, यानी कि 111 TPA. क्वेश्चन नंबर 25 नाउ. In which of the following conditions the lease can be terminated? A flux of time, on termination of lesser interest or power, on merger, all of the above. Any one of you. So the correct answer is option number D, that is all of the above is the correct answer of question number 25. Now question number 26. In which of the following cases a lease of immovable property does not determine, ठीक है, does not determine on the service of a notice to quit, by forfeiture, by express render, by efflux of time limited thereby? Any one of you. So the correct answer is option number A, that is on the service of a notice to quit. Again, which one of the following is not a ground for determination of lease? Efflux of time limited, implied surrender, expiration of notice of determination of lease, death of the lessee. So the correct answer is डेथ ऑफ अ लेसी. कौन से केस में? ये दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज. अ नोटिस अंडर सेक्शन 111 ऑफ द टीपीए कैन बी वेव्ड. 111 टीपीए के अकॉर्डिंग जो नोटिस है कब वेव होगा, ये किया जा सकता है? बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द पर्सन टू whom it is given, by implied consent of the person to whom it is given, by express consent of the person to whom it is given, by notice from either party. So the correct answer is, ठीक है जी, ए होगा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. A valid lease can be determined by option A, a flux of time, option B, forfeiture, option C, on expiration of notice period for determination of such lease, all of the above. Any one of you. लाइव चैट वाले साथ साथ बताते रहें जो लाइव हैं. सो द करेक्ट आंसर इज, ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है डी. बिल्कुल ठीक. 30. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ध्यान से सुनिए इसको. A lessee accepts from the lessor a new lease of the property leased to take effect during the continuance of the existing lease. This converts the former lease into exchange
converts the former lease into a perpetual lease, is an implied surrender of the former lease, is a voidable agreement. So the correct answer is option number C, that is an implied surrender of the former lease. Which of the following is a ground for determination of lease by forfeiture? A. On breach of express condition. B. On expiry of lease period. C. On surrender by lessee. D. On vesting of lesser's interest in the lessee. Any one of you. A, B, C, D. So option A, on breach of express condition. A. Now question number 32. A lets a house to B for 5 years. B under lets the houses to C at a monthly rent of rupees 1000. The 5-year expire, but C continues in possession of the house and pays the rent to A. C's lease is renewed from month to month, year to year, not renewed being sublet, none of these. Any one of you. So option A, renewed from month to month, is the correct answer. Now question number 33. What is the effect of holding over? होल्डिंग ओवर का क्या इफेक्ट होता है? होल्डिंग ओवर से क्या फर्क पड़ता है? द लीज बिकम इलीगल हो जाती है, द लीज इज रिन्यूड हो जाती है, द लीज बिकम्स एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है, द लीज बिकम्स वॉइड. एनी वन ऑफ यू. ए, बी, सी, डी. बी, द लीज इज रिन्यूड. ठीक है, लीगल जोन का आंसर बिल्कुल ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. A lets a farm to B for a life of C. C dies, but B continues in possession with A's assent. B's lease is determined, renewed from year to year, renewed forever, renewed for the year of death. So the correct answer is option number B. Renewed from year to year is the correct answer of question number 34. In the TPA, effect of holding over of lease is provided under 114A, 115, 116, 117. Any one of you. Option A, option B, option C, option D. क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है 116 सी. 36 का an act of interference with the property of an other may be justified by the consent of that other is defense falling under authority of law, lease and license, easement, none of the above. So the correct answer is option number B, that is lease and license is the correct answer. Now question number 37. Which one of the following transfers can be made orally? Option A, lease from year to year. Option B, surrender of lease. Option C, exchange of immovable property excluding rupees 100, simple mortgage. So option B, surrender of lease is the correct answer. नाउ एक्सचेंज से डील करते हैं जो सेक्शन, उनसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एक्सचेंज 118 से 121 तक. टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फ्रॉम फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर. मतलब आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सीधा स्पष्ट है, क्या होएगा? एक्सचेंज होगा. ठीक है, गिफ्ट नहीं होगा, सेल भी नहीं होगा, लीज भी नहीं होगा, क्या होगा? एक्सचेंज. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. In exchange, under the provision of the TPA, which of the following statement is true? In exchange, which under the TPA, which of the following statement is true? Exchange में क्या होता है? There is a consideration, there is a no consideration, there is no transfer of property, none of the above. तो क्या होगा? Consideration तो होगी ना? So there is a consideration. So option A बिल्कुल सही बता रहे हैं आप. Option A is the correct answer. Now question number 3. Ram transfer a house worth rupees 5 lakh to Shyam in lieu of a field rupees 2 lakh and rupees 3 lakh as cash. This transfer is a sale, an exchange, neither a sale nor an exchange, a settlement. Any one of you.
लाइव चैट में आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, उसके सामने उसका आंसर मेंशन करें. So the correct answer is option number B, that is an exchange. Now question number 4. That provision as to exchange of money has been provided under which of the following section of the TPA? 118, 119, 121, none of the above. So the correct answer is option number C, that is 121. So option number C. सेक्शन 121 में किससे डील करता है? एक्सचेंज ऑफ मनी से. Gift of tangible immovable property of value less than rupees 100 can be made under the TPA. ऑप्शन पढ़ेंगे, अब बताते रहना. ऑप्शन ए कहता है बाय ओरल एग्रीमेंट अकम्पनीड विद डिलीवरी ऑफ पोजेशन ओनली, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओनली, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय एट लीस्ट 2 विटनेस, आइदर बाय ओरल और बाय रजिस्टर्ड. एनी वन ऑफ यू. सो ऑप्शन सी, बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट टेस्टेड बाय एट लिस्ट 2. ध्यान रखना 2 होने चाहिए, कई बार ये 1 डाल देते हैं तो 1 वाला नहीं होएगा, 2 वाला हमने देखना है, तो 2 विटनेस होना ज़रूरी है. If a transfer house of rupees 2000 to B and we transfer a field of rupees 1200 and in addition E pay 800 in cash to A, the transfer is, कैसी होगी ये ट्रांसफर? एक्सचेंज है, सेल है, सेल एंड एक्सचेंज है, नॉन ऑफ द अबव. एनी वन ऑफ यू. A, B, C, D. So the correct answer is exchange, A. Now question number 7. आगे हम डिस्कस करेंगे गिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, अब ध्यान से करिए. पहले हमने कौन से करे हैं? एक्सचेंज से रिलेटेड. अब कौन से कर रहे हैं? गिफ्ट से रिलेटेड. सो गिफ्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फटाफट आप उसका आंसर बताना. गिफ्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द टीपी? गिफ्ट कहाँ पे डिफाइन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी बार आ चुका है. ठीक है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 122, ऑप्शन डी 25, 122. ठीक है, गिफ्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेक्शन 122 ऑफ द टीपीए 1882 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ गिफ्ट? किस किस गिफ्ट के बारे में सेक्शन 122 टीपीए का डील करता है या बताता है? गिफ्ट इंटरवाइवस, गिफ्ट मोरिटस काउजा, गिफ्ट बाय विल, ऑल ऑफ द अबव. एनी वन ऑफ यू. सो गिफ्ट इंटरवाइवस के बारे में डिस्कस करता है कौन सा सेक्शन? 122 ऑफ द टीपीए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 टीपीए 1882 प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, क्या क्या आता है प्रॉपर्टी में? ओनली मूवेबल, ओनली इमूवेबल, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, एग्रीकल्चर लैंड ओनली. एनी वन ऑफ यू. So the correct answer is option number 3, that is both immovable and movable is the correct answer of this question. आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following is not an essential element of gift? Essential element नहीं है गिफ्ट के लिए. Donor and donee, subject matter, transfer of subject matter, transfer must be for consideration. So the correct answer is option number 4. Transfer must be for consideration is the correct answer. Now next question is question number 5. Transfer of immovable property by way of gift requires registered instrument signed by or on behalf of donor, attestation by at least 2 witnesses, delivery of the property, both A and B. Any one of you. So the correct answer is both A and B. ठीक है जी. Question number 6 now. In case the donee dies before acceptance of the gift, the said gift under the TPA, valid, heritable, voidable, क्या होगा जी? void होना चाहिए, बताइए. ठीक है जी, बिल्कुल सही. Now question number 7. Question number 7 now. Find out the incorrect answer from the following. Gift is the transfer of ownership without consideration.
gift should be accepted during the lifetime of the donor. Option number C is if Dhoni dies before acceptance, the gift is void. Gift may be made orally only for of movable property. So the correct answer is option number 4. ठीक है जी, गिफ्ट किस चीज का हो सकता है? सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का. Now question number 8. Which one of the following is correct in respect of a gift under the TPA? There cannot be a gift of movable property. Only immovable property can be given in gift. The gift must be accepted by the donee only. If the donee dies before acceptance, the gift is void. Any one of you. Question number 8 का आंसर होता है. So the correct answer is option number 4. If the donee dies before acceptance, the gift is void. Now question number 9. The registration of a gift of immovable property is compulsorily, optional, compulsorily in relation to ancestral property, depends upon the court. So the correct answer is compulsory. Registration of the gift of immovable property क्या है? Compulsory registration करवानी जरूरी है. Which one of the following statement is incorrect regarding transfer of immovable property by gift? Instrument must be signed by or on behalf of the donor. Instrument must be signed by donor only. Instrument must be registered. Instrument must be attested by at least 2 witnesses. So the correct answer is option number B. Instrument must be signed by donor only. मतलब donor कौन होता है? देने वाला. As per section 122 of the TPA, gift का क्या मतलब है 122 के अकॉर्डिंग? The transfer of certain existing movable property made by donor to donee. The transfer of certain existing immovable property made by donor to donee. The transfer of property by donor to donee on certain consideration. The transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person, called the donor to another, called the donee, and accepted by or on behalf of the donee. So क्या होगा? डी. एक मेरा एक स्टूडेंट ट्रिक बताता है कि सर जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो सही होता है. ऐसा नहीं होता, तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़िए, फिर उसका आंसर लिखें. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बड़ा है तो आप सही ही होगा. Read the following proposition, find out which is incorrect. In a sale, there is an absolute transfer of all rights in the property sold and no rights are left in the transferor. In a lease, there is a partial transfer or demise and the right left in the transferor are called reversion. A gift comprising both existing and future property is void as the latter. Acceptance is not the pivotal requirement to constitute a valid gift. गलत बताना है, incorrect. Any one of you. गलत बताना है. So the correct answer is option number D. Acceptance is not the pivotal requirement to constitute a valid gift. Now again आगे डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following statement is true with regard to section 1 to 3 of the TPA? It provides an exception to 17(1)(a). It is a supplemental of section 17(1)(a). It provides an exception to section 71(b). It is a supplementary to section 17(1)(b). Any one of you. So the correct answer is option B. It is a supplemental of section 17(1)(a). Now question number 14. A gift of immovable property can be given by delivery of immovable property, by written instrument, by delivery and registration of document, none of the above. So the correct answer is option C, that is by delivery and registration of document. Now question number 15. Under a TPA, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी क्या होगी? फुल ऑफ फ्यूचर के बारे में क्या आगे कर दूंगा या हो जाएगा? वैलिड, वाइड, वाइडेबल, इरेगुलर. वाइड होगा. ठीक है जी. आज की बात करेंगे हमेशा. फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए क्या होगा? वाइड. काफ़ी बार आ चुका है ये एग्जाम्स में. यूजीएस, एमपी, बीजीएस, यूपी हायर. ठीक है, तो ध्यान से आप करिए. A gift comprising both existing and future property क्या होगा?
एग्जिस्टिंग के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, वैलिड, वाइड, यू कैन सी is wide as to the existing property, is wide as to the future property. हाँ जी, एनी वन ऑफ यू, ऑप्शन नंबर, पहले भी हमने किया है, फ्यूचर के लिए वाइड होगा, एग्जिस्टेंस के लिए वैलिड होगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। The chapter that deals with gift under the TP applies to Mohammedan gift, does not apply to Mohammedan gift, applies to all caste, creed, etc. applies to Parsi gift only. So the correct answer is option number B, that is does not apply to Mohammedan gift. Mohammedan का system अलग है, ठीक है जी, वो इससे deal नहीं करता. Where a gift is made of a property which is not in existence, which is the following section of the TPA Act declares its void. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. Any one of you, which is not in existence. So the correct answer is option number 124. Section 124. Which one of the following gift is not governed by the TPA? Onerous gift, mortis causa gift, universal gift, gift to disqualified person. TPA में नहीं आता, not governed by TPA. ध्यान से, ओनरस आता है, यूनिवर्सल आता है, बी और डी में बताइए। तो मोटिस कॉजा गिफ्ट इज नॉट डील अंडर द टीपीए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. A deed of gift is executed, tested and delivered to the Dhoni. The Dhoni accepts the gift. Before registration of the deed, the donor seeks to revoke the gift. Advise the Dhoni. Dhoni को advise करें. It can be revoked as it was not registered. Gift is not complete, therefore it is revocable. Gift is complete, the deed may be registered later on. He should wait till registration is done. क्या होगा? Any one of you. So the correct answer is option C. Gift is complete, the deed may be registered later on. X makes a gift of 50,000 to B. A reserves the right with B consent to take back at pleasure rupees 10,000 out of 50,000. Gift is void. Gift is valid. Gift is valid up to 40,000 and void as to taking back 10,000. Gift is voidable. ठीक है जी, तो 40,000 के लिए वैलिड होगा, जो 10,000 बाद वाला है that is void. So option C is the correct. Now question number 22. A gives a lakh rupees to B, serving to himself with B assent the right to take back at pleasure rupees 10,000 out of lakh. The gift is only void, invalid, holds good as to rupees 90,000. It is onerous. So option number C, that is hold goods at to 90,000 is the correct answer. क्योंकि 10,000 आउट ऑफ द लैख की बात करिए, 10,000 लैख, बाकी 90,000 से रिलेटेड है. नाउ ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ रुपीज 80,000 टू बी. ए ने क्या किया? गिफ्ट किया इस 80,000 का बी को, बट ए रिजर्व राइट विद बीज कंसेंट टू टेक बैक एट प्लेजर रुपीज 30,000. बट विल बी द लीगल स्टेटस ऑफ द गिफ्ट. लीगल स्टेटस बताना है. गिफ्ट क्या होगा? वैलिड है, वाइड है, वाइडेबल है, या वैलिड सिर्फ 50,000 के लिए. ठीक है, 50,000 के लिए ही वैलिड है, क्योंकि 30,000 के लिए उसने क्या किया हुआ? अपनी मर्जी रखी हुई है उसमें कि मैं ले सकता हूँ, तो 50,000 रहेगा. ठीक है. A gives a field to B, reserving to himself with B's assent the right to take back the field in case B and his descendants dies in A's lifetime. Can A take back the field? Yes, no. Condition is void. None of the above. So option is yes. ठीक है जी, very nice. Now question number 25. A transfers a house having market value of rupees 10,000 without consideration to B, but the house is under liability to pay public charges of rupees 15,000. The transfer is gift, onerous gift, actionable claim, none of the above. So the option B, that is onerous gift. ठीक है, ध्यान से करिए. Onerous gift is the correct answer. Now question number 26. The provision relating to onerous gift have been provided. सीधा सीधा, ठीक है, सभी को पता है 127 में क्या है? ओनरियस गिफ्ट है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा सीधा मार्जिनल नोट पूछा है. 127 किससे डील करता है? ठीक है, तो ओनरियस गिफ्ट. ये भी पूछ सकते हैं
127 में क्या डील करता है? तो ऑनरियस गिफ्ट। अगर ऑनरियस गिफ्ट का कहाँ पे है? तो 127। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन डबल डबल घूम के आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपीए डिफाइन यूनिवर्सल डोनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल डोनी, देखिए पहले हमने कौन सा किया? ऑनरियस। अब हम कौन सा करेंगे? यूनिवर्सल। तो ये कौन सा है? यूनिवर्सल कहाँ पे है? 128। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। A donee which has taken all the properties of the donor and also liable to discharge all the liabilities of the donor is known as an honorius donee, a gratuitous donee, a universal donee, none of the above. So the correct answer is option C, that is a universal donee. That is the correct answer of question number 28. Now question number 29. Universal donee is liable to the creditor of the donor. The liability of the donee is personal to the extent of the value of gifted property in hand based on pious obligation, limited to reasonable extent. So the correct answer is option B, that is to the extent of the value of gifted property in hand. Now question number 30. An universal donee gets the ownership of all property, the whole property and donor property in litigation, donor property and liability of the donor in respect of all the debts, only the right to perform last rites. So the correct answer is option number C, that is donor property and liability of the donor in respect of all the debts due. C. Now question number 31. Which section of the TPA preserves the rule of Mohammedan law and excludes the applicability of section 123 of the TPA, with mandates that the gift of immobile property must be effected by a registered instrument as stated therein? 126, 27, 28, 29. So 129 is the correct answer of question number 31. Now question number 32. नेक्स्ट हम डील करते हैं, जो डील टॉपिक है वो है that is transfer of actionable claims. An actionable claim can be transferred by a registered instrument, an instrument in writing signed by the transferor, a registered instrument attested by two witnesses, oral agreement. So कैसे होगा? B. An instrument in writing signed by the transferor. Option number B. Now question number 2. Which of the following is not an actionable claim under the TPA? Right to claim money payable under the Life Insurance Act, right to claim decretal sum, right to claim arrears of rent of a house, right to claim arrears of maintenance. So the correct answer is option number B, that is right to claim decretal sum. Now question number 3. Which one of the following pair is correctly matched? करेक्टली सही बताना है कहाँ पे डील करता है कौन सा. सो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताएं कौन सा सही है. तो यूनिवर्सल डोनी कहाँ पे था? 128 में. 128 ए लगा रखा है इसलिए ये गलत होगा. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ मनी कहाँ पे है? 121 में. तो मोर्टगेज डेट कहाँ पे है? 134 में. तो इसने क्या पूछा है? करेक्ट कौन सा है? तो क्या होगा? ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब है? क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट, अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट. बोथ ए एंड बी ओनली है. सो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों होंगे. क्या दोनों क्या है? एक्शनेबल क्लेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम? इनमें से क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं है? लॉटरी टिकट इज अ एक्शनेबल क्लेम. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन एक्शनेबल क्लेम. क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट इज एन एक्शनेबल क्लेम. तो क्या बचा? बी. बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच अमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्शनेबल क्लेम? क्या है? एरियर्स ऑफ रेंट. ठीक है, पहले हमने किया है. क्या है? एरियर्स ऑफ रेंट इज एन एक्शनेबल क्लेम. तो इसने पूछा क्या है कि कौन सा एक्शनेबल क्लेम है? तो ऑप्शन क्या होगा? डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्शनेबल क्लेम बताना है. अब फटाफट आप लाइव चैट में बताएं एक्शनेबल क्लेम क्या है. डिक्री है, राइट टू रिकवर प्रॉफिट फ्रॉम अ को शेयरर,
A claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immobile property. Right to recover damages by way of interest for a breach of contract. So option C, a claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immobile property. So option C is the correct answer of question number 7. ठीक है जी. Now question number 8. ठीक है जी, 8 करते हैं. अंडर द टीपीए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी जो है टीपीए के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो सकती है. एन ईजमेंट राइट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, मेयर्स राइट टू sue, right to future maintenance, actionable claim. So option D, that is actionable claim. Which one of the following is not an actionable claim? अब हमने क्या बताना है, actionable claim नहीं है. Mesne profit, arrears of rent, a share in partnership, a claim for return of earnest money. एरियर्स ऑफ रेंट तो हमने किया था, एक्शनेबल क्लेम है. तो इसने क्या पूछा, नहीं है. तो क्या होगा, मेसने प्रॉफिट. ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मैच करने हैं. ठीक है, हमने लिस्ट 1 कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. ठीक है, सब्रोगेशन, डॉक्ट्रिन फोल्डिंग ओवर, वेवर ऑफ फॉरफीचर. बताइए जी, इनमें से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है. ए किसके साथ डील करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35 में, सब्रोगेशन 92 में, होल्डिंग ओवर 116 में, वेवर ऑफ फॉरफीचर 112 में. ठीक है जी, हो गया क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इनको याद कर लीजिए, घुमा के पूछ सकते हैं. Which of the following pairs is correctly matched? Correctly बताना है हमने. Marshalling by subsequent purchaser 81 में, right of mortgage to redeem 60K, a right of unfructuatory mortgager to recover possession 62. None of the above. So the correct answer is option C, right of unfructuatory mortgage to recover possession. Now क्वेश्चन नंबर 12 से डील करते हैं. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करनी है हमने. Select the correct answer given using code below. Doctrine of subrogation कहाँ है, rule against perpetuity, fitting the grant by estoppel, doctrine of accumulation. Fitting the grant by estoppel 43, rule against perpetuity 14, subrogation 92, accumulation 17. हो गया जी, ऐसे कर लो यार, फटाफट आपको आंसर आने चाहिए. Now, in which transaction no trust in the property is created? Lease, license, mortgage, tenancy. इसका आंसर आप बताएंगे, मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड. इसका आंसर आप लाइव चैट में बताएंगे. In which transaction no interest in the property is created? Lease, license, mortgage, tenancy. बिल्कुल सही. So the correct answer is option number B, that is license is the correct answer. ठीक है जी. आज जो हमने टीपीए डिस्कस किया, ठीक है, टीपीए से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. ठीक है, और आप go.legal इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें भेज सकते हैं. टीपीए हमारा कंप्लीट हो चुका है. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें. चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और चैनल के साथ नीचे आप जब सब्सक्राइब करते हैं उसके राइट हैंड साइड में एक घंटी वाला बटन है. जो अभी तक आपने घंटी नहीं दबाई है तो उस घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.